Let's quickly start with what is the difference between an abstract class and an interface. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. बेसिकली एक इंटरफेस में हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक वॉइड प्रोजेक्ट वन एंड पब्लिक वॉइड मैनेजर वन. वी डोंट डिफाइन द मेथड्स, ठीक है. यहाँ पे इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी एक्चुअली डिफाइन द मेथड्स, ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एज वेल. तो यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, और हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं जैसे हमने रोल करके यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है. एंड वी हैव रिटन दी व्हाट द मेथड कैन डू. तो ये अलाउड है अभी करंट न्यू जावा वर्जन्स में कि वी कैन एक्चुअली डिफाइन एज वेल द मेथड्स, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट. तो वन डिफरेंस इज दिस. Second difference what he has said is that we are using the interface keyword, and here we are using the abstract keyword, which is not a good thing to answer in interviews, at least at the SD2 level. Okay, then moving forward, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. वो उसका मतलब क्या मैं बताता हूँ. बेसिकली वी हैव क्रिएटेड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय वन. तो दोनों को हम लोग ऐसे ये नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक क्लास एक्सटेंड्स एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय वन ऐसे नहीं कर सकते हम लोग जावा में स्पेसिफिकली, ठीक है. बाकी लैंग्वेजेस का आइडिया नहीं मुझे, बट वी कैन डू मल्टीपल इनहेरिटेंस. बट इन केस ऑफ इंटरफेस, राइट, वी कैन डू मल्टीपल इनहेरिटेंस. लाइक फॉर एग्जांपल वी लेट्स से वी हैव एन इंटरफेस एम्प्लॉय वन एंड वी हैव एन इंटरफेस एम्प्लॉय टू. तो हम लोग दोनों को भी जो है ऐसे कॉमा करके जो है हम लोग इसको एक्सटेंड्स, यहाँ पे जावा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पब्लिक क्लास न्यू एम्प्लॉय एक्सटेंड्स, sorry, implements I employ 1 and I employ 2. Okay, so we can do that. That's possible in Java. And then abstract class, third difference is abstract class can have constructors, right? So constructors basically मतलब क्या है, हम लोग जैसे ही हम लोग इस मेथड को इस क्लास को कॉल करते हैं तो the constructor gets called automatically, ठीक है, while instantiating this particular class. Okay, तो इस ये abstract class में possible है, but in case of interfaces we don't have this thing as at all possible, ठीक है. तो यहाँ पे चारों हैं, you can read them out, the same things that I said. ओके, नाउ बेसिकली व्हेन टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हेन टू यूज़ इंटरफेस, ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपन तब यूज़ करते हैं, सॉरी इंटरफेस अपन तब यूज़ करते हैं जब लेट्स से वी हैव अ परमानेंट एम्प्लॉय एंड वी हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है. एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हैव एन ईमेल एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी असाइंड विद अ मैनेजर, राइट. बट वी डोंट नो हु इज़ गोइंग टू बी देयर ईमेल, व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर ईमेल, और व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर असाइनिंग मैनेजर, ठीक है. In this case we use interface because we don't exactly know. An interface is a good choice when you know a method has to be there, but it can be implemented differently by different derived classes, okay. But in case of abstract classes, right, so let's say that we in here, so we have a permanent and a contractual employee, same. But here we have two methods, dress code and dress color. Dress code jo that can differ, okay, that can differ. Any like male can have a different dress code, female can have a different dress code. But in case of dress color, it's going to be a constant color, so blue is going to be the constant color. And in this case we can have a like a common abstract class which can inherit both of them. So basically when to use abstract class is good choice when you are sure about methods concrete defined and must be implemented in the same way in all the derived classes, like the dress code example. Okay, so that is it about this.